Hello everybody, welcome to my channel and I hope you all must be doing well. May God bless all of us. Today I'm going to discuss about history. You know, we all studied history in our school days, and most of the students who opted for the arts, so they must have done it, history, political science, economics, sociology, and all those things. Those are amazing subjects. In fact, during our time, the major people who became the civil service officers, like Indian Administrative Service, IAS, IPS, IFS, all the civil service exams, most of the people are from arts background. And even today, if you talk about all the spiritual leaders, like you talk about Sadhguru, Ramakrishna Paramahans, Swami Vivekanand, uh, Swami Chinmayanand, they all came from the same background: history, political science, economics, English, excellent in communications. So if you go to, talk about economics, you should understand the background of that country or the culture. So that's all about the history. So history being one of my favorite subject, and even if after school I didn't get a chance to learn more about history. There is a lot of, in fact, I follow Dr. Shashi Tharoor, and in spite of a brilliant student during his time, he opted for history because he had a passion for the history, all those books. If you, I mean, I'm sorry, I don't have any books by Dr. Shashi Tharoor, but I always, see some, watch some videos, YouTube videos, where he has been invited to certain university, colleges, and everywhere, talk about. So even if when I was talking about Dr. Subramanian Swami's recent book on economics, there is history at the background, and from that he comes. Even he has a nice video on one of the seminar in IB school at Hyderabad. That seminar, this is there in YouTube video. I can put a link to that in my description. In fact, he has written this economics books, taking the history, like how जो हमारे 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस वक्त that revolution was financed by the farmers of the country. So झांसी रानी लक्ष्मीबाई की उन्होंने दिया है एग्जाम्पल्स. उन्होंने जो किया था, जो against the Britishers, that revolution was not 1857 one, but this revolution, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी की जो revolution है, that revolution was sponsored by the farmers. So वो उस history से आते हैं, और फिर ब्रिटिश ने कैसे वो जो लगान लगाया, फिर ये सारी चीज़ें, और उसके बाद धीरे धीरे वो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं. That's an excellent book. I mean, what India was, and what India now. So, and how the British, even if they gave us something, but they took a lot of things from us. That's all about our history. So I have interest towards, if you do talk about your British Indian history, British history, American history, Japanese history, Chinese history, every country has a history. And this history towards the political science, about the politics, the leaders, then economics, all these things. It's all interrelated kind of things. History, political science, and economics.
Though I don't have any history, I mean, a book on political science, but yes, economics books. I have already put it in one of the video. So what I'm going to discuss is about what kind of book I have on the history. Um, so this one. In fact, first book I bought it is these are all these books I have, and the first book I had bought was when I was in Middle East. I bought this book, Freedom at Midnight. It's all about our independence, and one of the best authors are Dominic Lapierre and Larry Collins. इन्होंने जो किताब लिखा है इसमें बहुत सारी अच्छी तरह से हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस प्लस ब्रिटिश हिस्ट्री, ये ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिया है. फ्रीडम एट मिडनाइट मीन्स जो 15 अगस्त को रात को हमें जो फ्रीडम मिली थी, 14 अगस्त रात को जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, सो उन्हीं के उसी के ऊपर है. और इनके मुझे ये ऑथर्स कैसे पता चला, एक बार मैं जब मिडल ईस्ट में था, सो द मिडल ईस्ट पीपल दे डोंट लाइक इसराइलीज. सो ऐसे ही मुझे पढ़ते पढ़ते कहीं पर इन ऑथर्स का मुझे रेफरेंस मिला, जो डोमिनिक लाफियर एंड लैरी कॉलिंस. दैट बुक वाज ऑन जेरूसलम बॉर्निंग. सो इसराइल की जो अभी तो तेल अवीव है कैपिटल सिटी, उस टाइम में जेरूसलम था, तो जेरूसलम बॉर्निंग करके उन्होंने एक किताब लिखा था. उस किताब तो मुझे इन ऑथर्स का नाम मिला. वो किताब मुझे मिडल ईस्ट में नहीं मिली बिकॉज वहाँ पर because of the rivalry, not rivalry, it's a long political struggle, and from the beginning of lot of old things. I don't want to mention all those things here, but I got reference of these two authors, Dominic Lapierre and Larry Collins. And this is one of the best book written in very simple language. And इसमें तो ये भी है, जो आप लोग गदर द प्रेम कथा जो मूवी आपने देखा है सनी देओल की, उस मूवी का जो एक कहानी इसमें है, वहाँ तो उनको बहुत ही एग्रेसिव एक सरदार जी दिखाई दिए थे, बट इसमें जो असली सरदार जी की कहानी है वो रुला देने वाली कहानी है. मैं आज भी उसको मेरे ख्याल से रखा हूँ लिख के कहीं पर. Yeah, and I request you, if you get a chance to buy this book, so you should read that. I'm sorry, but that story is here. और वो स्टोरी को आप जब पढ़ेंगे ना, आपको रोना आ जाएगा. बट यहाँ पर जो हमारा गदर द प्रेम कथा में कुछ और ही दिखाया गया है उसमें. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रीडम एट मिडनाइट. उसके बाद मुझे ये बुक मैं खरीद के पढ़ रहा था. देखिए ये पुरानी हो गई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू. इसमें उन्होंने हमारे जो भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है इसमें. सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उन्होंने काफ़ी कुछ. डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक. आई थिंक द हिस्ट्री स्टूडेंट्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, दे मस्ट हैव राइट. उसके बाद मेरे पास एक और तीनों किताबें हैं, जो उनमें से एक है द पॉलिटिक्स बाय एरिस्टोटल. बहुत ही अच्छी बुक है ये. सो उन्होंने ये लिखा है कि मैन इज नेचुरली ए पॉलिटिकल एनिमल. वो उसको बताया है आखिर पॉलिटिक्स होता क्या है करके. सो
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं ये लोग ये बुक पढ़े होंगे या नहीं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस यू शुड रीड दिस. सो जैसे वो बताते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टेट टू अचीव द आइडियल स्टेट ऑफ गवर्नेंस, one that creates utmost happiness for its citizens? Are we right in considering democracy as the best form of government? In fact, why have a government at all? उन्होंने इस पे लिखा है. उसके बाद मेरे पास जो दूसरी किताब है वो है द रिपब्लिक बाय प्लेटो. सो ये एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सारी जो हैं, जो हिस्ट्री ऑनर्स के लोग हैं ग्रेजुएशन में, या फिर जो लोग पीएचडी ये सब करते हैं हिस्ट्री में, वो सारे लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं. और ये जो लिखते हैं, सो द रिपब्लिक बाय प्लेटो इज ए सोक्रेटिक dialogue written around 380 BC. It is one of the most influential works of political philosophy, as is the norm of Socratic dialogue. Here too, Socrates is the main speaker who engage in dialogue with other Athenians on the idea of justice. So, प्लेटो की ये किताब जो है, ये सब जो रिपब्लिक कंट्रीज होते हैं उसके ऊपर आधारित है. ये उसके बाद आता है, इनफैक्ट ये लोग पूछेंगे मुझे कि आप इनको कैसे से हिस्ट्री के अंदर ले रहे हो. मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन. मैं इसलिए इनको ले रहा हूँ कि हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य की या फिर एनिमल किंगडम की, हम भी मैन इज ए सोशल एनिमल बोलते हैं ना, हम तो एनिमल के वो उसी में जाते हैं, प्लांट में नहीं जाते हैं हम लोग. सो जैसे कि नेक्स्ट टू द बाइबल, नो वर्क हैज़ बीन क्वाइट एज इन्फ्लुएंशियल इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट्स एज द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. It's all about, origin of species laid the foundation of evolutionary biology as early as 1859. Extraordinary well-written, the book does not only explain evolution in an instructive and accessible manner, it also includes fascinating stories about how the process of natural selection occurs in the animal and plant kingdoms. So, origin of species, जैसे ये गरीला यहाँ पर दिखाई दिया गया है. अगर बायोलॉजिकल वे में हम देखें तो हम जो मनुष्य हैं, हम यहीं से धीरे धीरे प्रोसेसिंग होके आए हैं वक्त के साथ साथ. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक. एंड डार्विन मेथड जो है, डार्विन की किताबें, जो चार्ल्स डार्विन की किताबें हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं. इनफैक्ट बायोलॉजिकल लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको इन्हीं के इसी के अंदर हिस्ट्रिकल बुक्स के अंदर ही लेता हूँ. द नेक्स्ट इज एक स्मॉल बुक. हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स हम समझते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है. अपने देश को, अपने नेशन को और समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है. ये है नेशनलिज्म बाय रविंद्रनाथ टैगोर. छोटी सी बुक है, बट एक compendium of lectures delivered by Tagore during the First World War and the Swadeshi movement in India. Nationalism emphasizes Tagore's political and philosophical views on human understanding and its weakness for power and material holdings. So these are the things. And छोटी सी किताब में एक कहते हैं ना कि हम लोग अपने आप को नेशनलिस्ट समझते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं और अपने नेशन के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं और देशभक्ति की बात हम लोग करते हैं. सो ये है ट्रू नेशनलिज्म का एक छोटी सी किताब. आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स और एनीबडी टू हैव ए लुक टुवर्ड्स दिस बुक. एंड फाइनली आई हैव वन बुक. जब हम इतने सारी बातें करते हैं, सो मैंने ये किताब भी रखा हूँ, अपने संविधान को समझना
बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम किसी भी फील्ड के हों, इंजीनियरिंग के हो, यू नो मेडिकल साइंस के हो, एनी आई मीन इकोनॉमिक्स फील्ड के हो, किसी भी फील्ड के हो, हम लोग कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फील्ड के हों, अपने देश के संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हमारे देश चलता है। सो ये भी मेरे पास ये किताब है, और कभी कभी मैं इसको बैठ के समझ में तो आता नहीं है, बिकॉज उतना तो हम लोग ये तो वही लोग जो लोग पॉलिटिकल साइंस और ये सब में माहिर हैं, वही लोग इसको समझते हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई हिस्ट्रिकल बुक्स, एंड आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट yes, I sometimes, whenever I get time, I read it, and it gives me something about the past on the economics front. So जैसे कहते हैं ना कि if you don't know the past, where you have come from, how do you decide, or how will you decide where to go? So हमारे इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, बट मेरे पास सिर्फ यही किताब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।